Okay, now let's move to the last type of fits, that is force and shrink fits. Force and shrink fits constitute a special type of interference fit, normally characterized by a maintenance of constant bore pressure throughout the range of sizes. So the interference therefore varies almost directly with diameter, and the difference between its minimum and maximum value is small, to maintain the resulting pressure within the reasonable limits. So F1 through Fn5 produce a series of force and shrink fits. So each series produces its own characteristic pressure throughout a particular series. So here you see the class of fits from Fn1 to Fn5, और यहाँ पे उनकी डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन फॉर यूज जो है वो बताया हुआ है फॉर योर रेफरेंस पर्पस. So now we have a 2 inches rod is to be assembled with a bushing by heating the bushing. So at last 4 feet is recommended. Draw the rod and bushing, dimension them. Do an analysis of the allowance again. So this time we use the table number 11 for ANSI standard force and shrink fit. तो nominal size जो है हमारा वो इस रेंज में लाइट आ रहा है, और जो फिट हमें गिवन था क्वेश्चन में वो FN4 है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी. सिंपल. अब आप दोबारा से कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे. सो फिगर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड शो द टॉलरेंस एंड अलाउंस दैट अप्लाइड टू द बुशिंग एंड द रोड. So analysis will produce the following result: as the combination of the smallest hole and the largest rod size will produce the maximum interference, while the combination of largest hole and the smallest rod size will produce the minimum interference as shown in table. तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम इंटरफेरेंस अटर हो रही है और यहाँ पे मेरे पास मिनिमम इंटरफेरेंस अटर हो रही है. So if our hole is made at MMC पोजीशन, ये उसकी वैल्यू है, और जो रोड है वो भी MMC पे बन जाएगी, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, और जो मैक्सिमम इंटरफेरेंस है वो आपकी नेगेटिव में जा रही है. तो आपको फोर्सफुली हीट करके अपने ऑब्जेक्ट को असेंबल करना पड़ेगा. तो प्रोसीजर जो है वो सबका ही सेम है, सिर्फ आपने प्लस माइनस ही करना है. बट द थिंग इज कि आपने टेबल से वैल्यू को प्रॉपरली पिक करना है, और फिर उसके बाद आपने उनकी जो इंटरफेरेंस है मैक्सिमम मिनिमम एक्सेट्रा और जो अलाउंस है वो आपने कैलकुलेट करनी है. और ये मेरे पास इसकी ड्राइंग आ गई. थैंक यू.